Hello students. So today we will going to start the new chapter and the name of the chapter is your bills of exchange. Okay. So what do you mean by bills of exchange? Bills of exchange का मतलब क्या होता है? So bills of exchange can be considered as a written document or it can be considered as the written agreement directing a person to pay the amount specified into the bill. So whatever the amount which has been written on the bill, okay, so on that particular date the person has to pay the amount on the basis of that bills of exchange, okay, or it can be considered as to the order of the specified person or bearer of the instrument. Okay, so who is the bearer of the instrument? The holder of the bill would be considered as the bearer of the instrument. That means ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, in which on the particular due date what happens, your person who has signed the bill, okay, so he or she has to pay the particular amount on the specified date. That is your specified date means that means payment of the bill would be made on the particular date. Date means your due date or payment date. ठीक है. So now we will consider as your parties to the bills of exchange. So parties का मतलब क्या होता है? Persons associated with the bills of exchange. So normally there are three persons who are generally associated with the bills of exchange. So first one is your drawer, second person is your drawee, and third person is known as your payee. Okay. So now who is known as a drawer? Drawer का मतलब क्या होता है? Drawer is the person who draws और मेक्स द बिल. ड्रॉ का मतलब क्या होता है? बिल बनाना. तो जो पर्सन जो बिल बनाता है, ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर बिल इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू बिजनेस पर्सन, वन मस्ट बी द सेलर एंड सेकेंड वन इज द बायर. ठीक है. सो द पर्सन हु, फॉर एग्जाम्पल सपोज ए एंड बी आर टू पर्सन, ठीक है, ए एंड बी आर टू पर्सन, ओके, एंड ए सोल्ड गुड्स टू बी. ए सेल किया गुड्स, ठीक है, say for ₹5,000 and this sale is your on the basis of credit sale. That means who will prepare the bill? A will prepare the bill on B. ठीक है. So that means A would be considered as your drawer. So drawer का मतलब क्या होता है? Drawer is the person who makes or prepares the bill or who draws the bill. Now second one is your drawee. Drawee का मतलब क्या होता है? Drawee is the person, okay, on whom the bill has been prepared, जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है. ठीक है. That means you can consider drawee is the person who is directed by the drawer to pay the amount and who gives the acceptance. That means सुनो, जब A बिल बनाता है B के ऊपर में, ठीक है, तो that means उस बिल के ऊपर में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बिल मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड. उसको क्या करना पड़ेगा? उसमें उसको स्टैम्प कराना पड़ेगा उसमें, ओके, टू ब्रिंग इनटू योर लीगल एविडेंस. ओके. नाउ ऑन दैट पर्टिकुलर बिल व्हाट इट इज टू बी रिटन, उसमें लिखा रहेगा एक ड्यू डेट. ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? पेमेंट डेट. ओके. एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट बी इज एंटाइटल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट. ठीक है. Now to make the bill authentic, what A will do? First of all, A will prepare a bill on B. Bill तो बना देगा, but B has to put signature on the particular bill. That means by putting the signature on the bill only, by making signature on the bill only, the bill will be considered as a what? As an authentic or legal bill. ठीक है. उसको legal valid बनाने के लिए B का signature होना जरूरी है. And who is B? In this case B would be considered as a what? B would be considered as a drawee and A would be considered as a what? As your drawer. तो कहने का मतलब है the person who sells the goods on credit would be considered as your what? As your drawer. ठीक है, क्योंकि जो सेल करेगा वही बिल बनाएगा. And the person who purchased the goods on credit would be considered as your drawee. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में एक नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. एंड नाउ यू कंसीडर दैट पर्टिकुलर बिल, ठीक है, दैट इज टू बी स्टैम्प्ड बाय द कोर्ट एंड ऑन द ड्यू डेट इफ सपोज इफ द ड्रॉई कुड नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल. ओके. सो व्हाट ड्रॉयर कैन डू? ए क्या कर सकता है? ए कैन प्रेजेंट द बिल टू द कोर्ट फॉर फर्दर एक्शन.
ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉयर एंड ड्रॉई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन अगेन थर्ड पर्सन इज द पेई। नाउ द क्वेश्चन कम्स हु इज द पेई, ठीक है। पेई बोलने से ही इज द थर्ड पर्सन और पेई इज द पर्सन टू हुम ड्रॉई मेक्स द पेमेंट। तो जनरली क्या होगा, ड्रॉई जिसको पेमेंट करता है, द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, सच पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज योर व्हाट, एज योर पेई। सो इन दिस केस सपोज A is the drawer and B is the drawee. On the due date or payment date, due date is considered as your payment date. Drawee will make the payment to whom? To drawer. So in this case, the drawer and the payee is the same person. Okay. Sometimes what happens? There might be the third person also. ठीक है. For example, suppose C आ जाता है. Third person is your C. Okay. So suppose B is making the payment to whom? Instead of making the payment of the bill to A, B is making the payment to C or third person. Why? Because that bill is to be transferred by whom? By A. A अपना bill C को दे दिया, ठीक है। तो ड्यू डेट में कौन पैसा देगा? ड्रॉई will make the payment to whom? To C. So in this case, C would be considered as your what? As your pay. तो pay का मतलब क्या होता है? Person to whom ड्रॉई makes the ultimate payment on the due date, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज एज वी नो इट इज योर करंट एसेट्स, ठीक है। एंड नाउ यू कंसिडर कि फ्रॉम द इन द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। अगर हम ड्रॉयर बोलेंगे, अगर हम ड्रॉयर ए को मान के चलते हैं तो इन द बुक्स ऑफ ए, एंड ड्रॉई को बी मान के चलेंगे तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि इन दोनों के बीच में बिल एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो बिल जब एक्सचेंज हो रहा है तो दैट मीन्स ड्रॉई विल पुट द सिग्नेचर ऑन द बिल टू मेक द बिल ऑथेंटिक। ऑथेंटिक बनाने के लिए ड्रॉई सिग्नेचर करेगा, ठीक है। फ्रॉम ड्रॉयर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ड्रॉयर क्या करेगा? उस बिल को संभाल के रखेगा, ठीक है। सो दैट बिल वुड बी कंसिडर्ड एज योर बिल रिसीवेबल। उसको वो एक चेक की तरह संभाल के रखेगा। व्हाई? बिकॉज दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर व्हाट? बिल रिसीवेबल। एंड फ्रॉम द ड्रॉई पॉइंट ऑफ व्यू, bills it would be considered as a what? It would be considered as your bills payable. Why? Because it is a liability for whom? For B. B को पैसा देना है, तो वही सेम बिल B के नजर में और ड्रॉई के नजर में वो क्या हो जाएगा? bills payable. And that same bill from the point of view of A or drawer, that would be considered as your what? Bill receivable. Okay. So now in this chapter only we are required to pass the journal entry. इस चैप्टर में क्या है? Only we are required to pass the journal entry in the books of drawer as well as in the books of drawee, and if required third person is there, then we are also required to pass the entry in the books of pay, ठीक है। So now let us discuss our journal entry. So now first of all पहला conditions क्या होगा? When goods are sold on credit, सबसे पहले goods क्या होगा? बेचा जाएगा। As I have said, in case of cash transaction, उस समय तो कैश आ जाएगा, so there would be no bill is to be accepted. तो bills of exchange को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले two persons होना चाहिए, एक क्या? seller, second क्या? buyer, and there must be the credit transaction between both the person. Seller is otherwise known as drawer and buyer is otherwise known as drawee, ठीक है। तो what will be the entry? Suppose A sold goods to whom? To B. तो इन द बुक्स ऑफ ए, तो ए किसको बेच रहा है? बी को। सो बी इज योर व्हाट? पर्सनल अकाउंट, ड्रॉई, ठीक है। तो रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो ड्रॉई अकाउंट वुड बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग क्रेडिट सेल्स, ठीक है। सो नाउ अगेन साइमल्टेनियसली वी विल सी इन द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। अब अगर ए बेच रहा है गुड्स किसको? बी को, दैट मींस इन अदर वर्ड्स बी क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। सो व्हेन गुड्स आर purchased on credit, so what will be the journal entry in the books of B? Purchases account debited to किससे ले रहा है? वो A से ले रहा है। So A is your drawer, debit the receiver, credit the giver. So entry would be purchases account debit to drawer, narration what? Being credit purchases. Okay. So once the goods has been purchased on credit, now what happens? A will draw a bill on whom? On B. ए गुड सेल कर रहा है किसको? बी को। तो बिल कौन बनाएगा? ए बिल बनाएगा। एंड वंस द ए विल प्रिपेयर द बिल, ओके, सो ही विल सेंड द बिल टू हुम? टू बी फॉर सिग्नेचर, फॉर हिज सिग्नेचर। सो आफ्टर साइनिंग हिज बिल, व्हाट ड्रॉई विल डू? ड्रॉई विल रिफंड द बिल टू हुम? टू ए। वो क्या करेगा? वो वापस कर देगा बिल को,
ठीक है. So only when B will make his signature on the particular bill, okay, so the bill will become authentic. उसमें लिखा रहेगा कि what is the due date and how much amount this drawing has to be paid. Okay, so for that, what is the journal entry? When bill is prepared or accepted. Now from your A point of view, okay, it is your what? Bill receivable. So bill receivable is an asset. Modern rule is your all assets shows debit balance. So bill receivable account debited to drawee. ठीक है. ड्रॉई क्यों लिख रहे हैं हम? यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो ड्रॉई इज द गिवर. वो बिल अपना इसको देगा. किसको देगा? ड्रॉयर को. Here in this case, drawee has been debited. Now here, drawee has been credited. Narration being acceptance of bill for ... months. It may be 2 months or it may be 3 months, whatever it would be, as prescribed in the question. Now in this bit, in the books of drawee, when acceptance is given, ये acceptance दे रहा है, किसको मिल रहा है? ड्रॉयर को. So debit the receiver. यहाँ पर ड्रॉयर क्या कहते थे? क्रेडिट किए थे. Now we have to debit the your ड्रॉयर account. So ड्रॉयर account will be debited to bills payable account. And remember, bills payable account, since it is your liability of the business. Okay. So from the ड्रॉई point of view, it is a liability. पैसा देना है उसको, पर्ची में साइन करा लिया है. ठीक है. So that will be considered as your what? Your credit balance. ठीक है. Narration being acceptance given. Now what happens after the due date on the particular day? On the due date means your payment date. What happens? Bill is to be met at due date. Bill is met at due date means on the due date B will make the payment to whom? B will make the payment to A. So what will be the entry? Cash account debited or bank account debited. पैसा आ रहा है. Debit what comes in to bill receivable. हम bill receivable यहाँ debit था, यहाँ पे credit कर रहे हैं. Why? Because A will cancel the bill. Okay? क्योंकि जब तक A अपना bill B को नहीं देगा तब तक B will not make the payment of the bill. So after making the payment of the bill, A will cancel his bill. Narration being bill met at maturity, or we can write being cash received on due date. In this case, in the books of drawing, B पैसा दे रहा है. So when payment is made on due date, what will be the entry? Bills payable यहाँ credit है. Cancel करने के लिए क्या करेंगे? Debit करेंगे. Bills payable account debited to cash or to bank account. पैसा जा रहा है तो debit what comes in, credit what goes out. ठीक है. तो cash or bank account would be credited. Narration being amount paid. Okay. So this is how we are required to pass the journal entry in case of bills of exchange. So now let us solve the practical questions. So question you can see from the board. Your on 1st January 2019, A sold goods to B for rupees 5,000. ठीक है. A goods बेच रहा है किसको? B को for rupees 5,000 plus IGST at the rate of 18%. So IGST is to be charged at the rate of 18%. A received rupees 900 by check from B and drew on him a bill for the balance amount payable 3 months after date. That means the bill has been accepted for 3 months. Okay. Now the bill was duly accepted by B. ठीक है. A retained the bill till due date. A bill अपने पास रख रहा है due date तक. On the due date, the bill was paid. That means amount was paid. Pass necessary journal entries in the books of A and B. That means we are required to pass journal entries in the books of both the party. That is your drawer and drawee. So before solving the question, so one thing is to be kept in the mind, that is your about your due date. Okay. So what do you mean by due date? So due date means the date on which the payment is to be made. Okay. So the date on which the payment is to be made. The payment is to be made. Okay. That is known as the what? That is your due date. Okay. So actually what happens, whatever the date, due date would be there, we have to add what? We have to add 3 days of grace. हमको क्या ऐड करना पड़ता है? Add days of grace. So days of grace will be how much? 3 days. Actually what do you mean by days of grace? Days of grace means so extra 3 days which is to be given by whom? By the drawer. To whom? To drawee on the payment of the bill. And it is compulsory. 3 दिन वो fix किया हुआ है. ठीक है. So now, for example, suppose here the bill has been prepared as on January 1st. So Jan 1st में bill बनाया गया था and acceptance has been received for how many months? For 3 months. So calculate the due date. So what will be the maturity date? So maturity date would be January 1st से 3 months. So maturity date would be your April 1st. Okay. So April 1st 2019 is your
what your maturity date. Now what will be the due date? We have to add 3 days of grace. So add 3 days of grace. So 3 days of grace. ठीक है. So what will be the due date? Due date would be April 4, 2019. Okay. So due date would be April 4, 2019. That means whatever the due date would be there, maturity date would be there. So on that particular date, we have to add 3 days of grace, and that would be considered as your what? As your days of grace. Okay. Or this would be considered as a what? April 4th would be your due date. Okay. So now suppose on that particular day, if there is your public holiday, अगर सपोज कोई पब्लिक हॉलिडे पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल सपोज 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जयंती, और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे. सो व्हाट विल बी द ड्यू डेट? इन केस ऑफ योर पब्लिक हॉलिडे, 1 डे बिफोर द ड्यू डेट वुड बी कंसिडर्ड एज द ड्यू डेट. फॉर एग्जांपल सपोज हम लोग का आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस अक्टूबर 2 पड़ रहा है हम लोग का ड्यू डेट. ओके, दैट मीन्स द पेमेंट वुड बी मेड ऑन अक्टूबर 1. एक दिन पहले हमको पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. सो नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. So as we are required to pass the journal entries, so we have to maintain the format of journal, date, particular, LF, debit and credit. So this is in the books of A, drawer. Separately, you have to required to pass the journal entry in the books of drawing, B. Same format, date, particular, LF, debit and credit. Okay. So let us solve the question. So January 1st, okay, 2019, A sold goods to B for rupees 5,000. So what will be the entry? Drawing account debited. Drawing मतलब कौन है? B है. So B debited to sales account. So how much is your sales? Sales is your 5,000. ठीक है. साथ में क्या दिया हुआ है? IGST 18%. 5,000 का 18% कितना आएगा? 900. And that IGST will be considered as a what? Output IGST. And output IGST is always credited as we have read. So to output your IGST account. So how much it would be? 900. So what will be the total sale? So total is your 5,900. Okay. Narration: being goods sold, being goods sold with IGST at the rate of how much percent? 18%. ठीक है. Jan 1st. Now on that date what happens? रुपीज 900 was paid by check. 900 रुपीज हम चेक का पेमेंट कर दिए, मतलब 5,900 में से कितना का चेक पेमेंट किया? 900. एंड द बैलेंस अमाउंट पेबल एंड ड्रू ऑन हिम अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट. अब बैलेंस अमाउंट कितना होगा? टोटल अमाउंट वाज 5,900. ओके. सो आउट ऑफ दैट वी हैव पेड हाउ मच? रुपीज 900. दैट मींस द बिल हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर व्हिच अमाउंट? फॉर रुपीज 5,000. सो व्हाट इज विल बी द जर्नल एंट्री? सेम डेट, January 1st, 2019. So bill receivable account debited, कितना का बिल बन रहा है? 5,000. ओके. बाकी का पेमेंट आ गया, तो पैसा आ रहा है. एंड द पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय चेक. डेबिट द रिसीवर. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड. बैंक अकाउंट डेबिटेड. हाउ मच वी हैव रिसीव्ड? 900. और यहाँ ड्रॉइंग को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू बी. ओके. एंड हाउ मच इज द अमाउंट? अमाउंट इज 5,900. Okay, what will be the entry? Being acceptance received for how many months? For 3 months. For 3 months. And amount received by check. And amount received by check. ठीक है, पैसा हमको मिल गया. Okay, so दिस इज योर, यहाँ पे बी क्या था? डेबिट था. अब हम उसको क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए. कैंसिल करके बिल बना दिया 5,000 का. नाउ ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय बी, मतलब बी हैड पुट द सिग्नेचर ऑन द बिल एंड रिटर्न बैक द बिल टू हुम? टू ए. ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, मतलब ए अपने पास बिल को संभाल के रखा है अलमीरा में अच्छा से. ठीक है. ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज पेड. The bill was paid. That means B had made the payment to whom? To A on the due date. Now your due date would be from January 1st. Three months was there. So January 1st से 3 months कितना हो गया? April 1st. Okay. And 3 days of grace. It is mandatory. Compulsory add करना. So what will be the due date? Due date would be April 4, 2019. मतलब पैसा मिल गया due date में. ठीक है. अब क्या लिखेंगे? April 4th, 2019. क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है. So cash account would be debited for how much? 5,000. Okay. To bill receiver account. To bill receiver account. How much it would be? Your 5,000. Narration:
being cash received. Okay, being cash received. So this is how we are required to pass entry in the books of drawer. Now in the books of drawing B. So Jan 1st 2019 हम क्या कर रहे हैं, बी क्या कर रहा है, परचेजेस कर रहा है. सो व्हाट विल बी द एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. ठीक है, अगेन योर इनपुट, इसके लिए आउटपुट था तो इसके लिए क्या होगा, इनपुट. इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड. ओके, परचेज कितना का था, 5000. इनपुट आईजीएसटी इज 900 टू ड्रॉयर. हु इज ड्रॉयर, ड्रॉयर इज a. हाउ मच इट वुड बी, अमाउंट वुड बी 5900. Narration, being goods purchased, being goods purchased with IGST at the rate of how much percent, 18%. ठीक है, ये सेल किया तो ये क्या क्या होगा, परचेज क्या होगा. नाउ बिल इज टू बी मेड, बिल बनाया गया है सेम डेट में जनवरी 1st 2019 एंड ही हैज पेड द अमाउंट ऑफ ₹900. सो ए डेबिटेड हाउ मच, 5900. पैसा जा रहा है इसके पास में, चेक. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो टू बैंक अकाउंट, हाउ मच ही हैज पेड, ₹900 and rest amount would be prepared as a bill. That will be your two bills payable account. And how much bill has been prepared for ₹5000. Okay, narration, being check paid, being check paid and bill accepted. ठीक है, बिल को एक्सेप्ट किया गया है. Okay, now on the due date, B has make the payment to whom, to A, and due date is your April 4th 2019. So April 4 2019, what will be the entry, bills payable यहाँ पे क्रेडिट है, हम यहाँ क्या करेंगे, bills payable account would be debited. So bills payable account debited to cash. बिल कितना का था, 5000. So how much he has paid, ₹5000. So 5000. Narration, being cash paid, being cash paid or being amount paid. Okay, so separately we are required to pass the journal entry in the books of drawer as well as journal entry in the books of drawing B. Okay, so I have prepared here simultaneously, आपको अलग अलग एंट्री पास करना पड़ेगा. Okay, so this is how we are required to pass the journal entry in the books of both the parties. So that's all for today. Thank you.